Good morning, students. Today we are going to discuss the problem of extremum, that means maximum and minimum of a function. Okay, in last class we discussed the theory and some problems of maximum and minima. Now today's question is, find the extreme points of the following function. Specify the extremum is a maximum or minimum. Find the extreme values. Y is equal to sin to power px into cos to power qx, where p and q greater than 0 and x belongs to open interval 0, pi by 2. X belongs to open interval 0, pi by 2. Okay, this is a very important question. The question is also so that the function attains, so that the function sin to power px into cos to power qx, where p and q greater than 0 and x belongs to open 0, pi by 2, attains its maximum at x is equal to 10 over square root of p by q. Okay, so the solution given y is equal to sin to power px into cos to power qx. Condition given pq greater than 0 and x belongs to open 0, pi by 2. Taking log on both sides, so ln y is equal to ln sin to power px into cos to power qx. So implies ln y is equal to, this is p ln sin x plus q ln cos x. Log m into n कहे log m plus log n, log m to power n कहे n log m. So differentiating both sides with respect to x, x, we get 1 by y into dy by dx is equal to p by sin x into derivative of sin x is cos x. P is constant, ln fx कहे 1 by fx and derivative of fx means cos x. ये भी q constant, ln cos x means 1 by cos x, derivative of ln cos x means 1 by cos x into derivative of cos x minus sin x. So implies dy by dx is equal to y into p cot x minus q tan x. dy by dx is equal to y into p cot x minus q tan x. Okay, so find d square y by dx square, d square y by dx square, d square y by dx square. This is u into v formula. So dy by dx into p cot x minus q tan x plus y into derivative of p cot x, p constant, derivative of cot x minus cosec square x. So minus p cosec square x minus q constant, derivative of tan x sec square x. Okay, sec square x. तो ये d square y by dx square. For critical values, put dy by dx is equal to 0, implies y into p cot x minus q tan x is equal to 0. So implies y is equal to 0 or p cot x minus q tan x is equal to 0. Y equal to 0 means sin to power px into cos to power qx is equal to 0. ये p cot x is equal to कौन पाइल q tan x पाइल. तो ये कौन आसो sin x is equal to 0 और cos x is equal to 0. sin x equal to 0 और cos x equal to 0.
ये कौन देख q 10x इज इक्वल टू p बाई 10x कट एक्स कले 1 बाई 10x तो ये कौन आसला x इज इक्वल टू 0 आड़ कौन आसला x इज इक्वल टू पाई बाई 2 x cos x 0 means x equal to pi by 2 sin 0 means x equal to 0 तो both are does not belongs to 0 to pi by 2 both are does not belong to 0 to कौन pi by 2 okay both are does not belongs to 0 to pi by 2 okay तो ये देखो कौन आसला 10 square x is equal to p by q तो 10x टा कौन आसीबो 10x आसला रूट p by q रूट p by q प्लस वन मान नुहे ओनली प्लस रूट p by q बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 तो आम कौन कले माइनस नेले आम ओनली कौन ने टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 तो टेकिंग कौन ने पॉजिटिव साइन तो 10x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p by q ओके ओके तो व्हाट इज sin x तो 10x इज स्क्वायर रूट ऑफ p by q तो sin x is equal to what this is perpendicular this is base तो this is p by p plus q root this is sin x is square root of p by p plus q and cos x is equal to q by p plus q root ट्रायंगल ड्रॉ करिबा दिस इज रूट p cos x is equal to square root of q by root p plus q केमी देखो टिके this is the triangle this is angle x so this is the root p this is the root q okay so this is the square root of p plus q तो sin x कहले root p plus q cos x कहले root q by root p plus q तो sin x ने cos से हम दरकार थला आसी गला तो नेक्स्ट कौन करिया at x is equal to square root of p by q d square y by dx square आने पके दियो d square y by dx square is equal to dy by dx into p cot x minus q tan x at x is equal to root p by q minus आगुआ से देखो y into p cos x square x plus q sec square x this also at x is equal to कौन root p by q देखो at x when x is equal to root p by q 10x is equal to root p by q means x is equal to square root of sorry x is equal to tan inverse root p by q 10x is equal to root p by q तो implies x is equal to tan inverse root p by q so this is tan inverse root p by q this is also tan inverse root p by q okay so when x is equal to tan inverse root p by q that means tan x is equal to root p by q so dy by dx is 0 because dy by dx is 0 means we get x is equal to tan inverse root p by q okay so this is 0 this portion is 0 so this is equal to 0 this is 0 minus what is y is sin to power px and cos to power qx y is what sin to power px and cos to power qx so sin x and cos x both are positive because sin x and cos x both are positive because x greater than 0 to pi by 2 so in first quadrant sin and cos both are positive so y is positive next
p q both are greater than 0 given अछि p and q both are greater than 0 cos x square power even अछि तो cos x square positive sec square also positive तो this is y is positive value तो अगर माइनस अछि माइनस इन प्लस कोन ना माइनस लेस देन 0 again since x belongs to 0 to pi by 2 x belongs to 0 to pi by 2 तो sin and cos both are positive तो sin to px into cos to qx positive therefore y is positive so y is positive next p and q both are greater than 0 given p greater than 0 and q greater than 0 cos x square power even power अच्छी sec square sec power also even अच्छी तो cos s p cos s square positive q sec square positive so their sum is positive and y is positive so their product is positive so positive into minus is equal to negative so d square y by dx square is negative d square y by dx square is negative means function is minimum sorry function is maximum negative means function is maximum therefore y is maximum at x is equal to tan inverse root p by q तो एक्स्ट्रा मैक्सिमम कोड हल्ला एट x इक्वल tan inverse root p by q बर्तमान कोन आनिया मैक्सिमम वैल्यू आनिबा मैक्सिमम वैल्यू therefore local max value is equal to f of root p by q ले कोडी पके हमें व्हाट इज fx is equal to sin to power px into cos to power qx तो sin to power px तो हम sin x रे वैल्यू पका दबा हमें cos x रे वैल्यू पका दबा नहीं की अच्छा तो sin x कहले p by p plus q रे रूट दिस sin x पावर p into cos x कहले root q by p plus q अरे होल रूट वाला this is root this is also root वाला p by p plus q root this is also p by q by p plus q root whole power q sin x power p cos x power p sin x कौन नहीं जामे root p by p plus q cos x कौन root q by p plus q तो is equal to root p by p plus q power p plus q sorry this is p power p by 2 divided by p plus q power p by 2 into q power q by 2 divided by p plus q power q by 2 so is equal to p power p by 2 into q power q by 2 divided by p plus q power p plus q by 2 so this is the maximum value this is the maximum value so the question के वजह से the question is question कौन से कहलो same question we can write the question will be the above question will be so that the function sin to power px into cos to power qx q greater than 0 x belongs to 0 to pi by 2 attains its maximum at x is equal to tan inverse root p by q also find its maximum value the question 8 टाइप रे भी आसी पारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन use the function f of x equal to x to power 1 by x comma x greater than 0 prove that e to power pi is greater than pi to power e सेकंड क्वेश्चन कौन देला f of x is equal to x to power 1 by x दिया है तो फर्स्ट कौन करिया हमें डेरिवेटिव बाहर करिवा ना गिवन f of x is equal to x to power 1 by x this is variable to power variable तो टेकिंग log ln f x
is equal to 1 by x ln x, 1 by x ln x, x greater than 0 दिया है। Differentiating both side with respect to x, so 1 by fx into d by dx of fx is equal to u into v minus 1 by x square ln x plus 1 by x into 1 by x. U into v, derivative of 1 by x is minus 1 by x square into ln x plus 1 by x रहा, derivative of ln x टा 1 by x. तो implies d by dx of fx टा कौन है, f dash x by fx is equal to 1 by x square कॉमन कर देले, दिस इज 1 माइनस ln x, 1 by x square कॉमन कर देले, इटा प्लस इटा माइनस अछि 1 माइनस ln x. तो implies f dash x is equal to fx by x square into 1 minus ln x. तो what is fx? fx is x to power x. तो f dash x is equal to x to power 1 by x square into 1 minus ln x. Okay, for critical values, for critical value put dy by dx is equal to 0. तो implies x to power 1 by x square into 1 minus ln x is equal to 0. तो implies 1 minus ln x is equal to 0 because x is greater than 0. तो implies 1 is equal to ln x. तो 1 कर ले ln e is equal to ln x, implies x is equal to e. This is the critical value. तो x is equal to e the critical value. Okay. अच्छा. This is a number line. This is 0. This is infinity because x greater than 0. X is greater than 0 to infinite निहाइची. मध्य कौन रहेला e. When x less than e. When x less than e. तो implies ln x is less than ln e. तो implies ln x is less than 1. तो implies ln x minus 1 is less than 0. ln x minus 1 is less than 0. तो ln x minus 1 is less than 0 means 1 minus ln x is greater than 0. तो implies x to power 1 by x square into 1 minus ln x is greater than 0. Okay, so this is positive. So implies f dash x is greater than 0 for x less than e. When x less than e, f dash x is positive. When x greater than e, when f dash x greater than, sorry, when x greater than e, this is negative. When x is greater than e, f dash x is less than 0. तो f dash x is less than 0 means एटी increasing हला, एटी decreasing हला. When x crosses e, when x crosses e or when x passes e, when x passes e from left to right, L to R, left to right, f dash x changes sign from positive to negative. So f of x is maximum at x is equal to e. And the maximum value is max value is equal to f of e, local max. तो f of e means x जगह e put करो, x जगह e पकड़ कौन सी हो, e to power 1 by e. इसी तरह maximum value, local maximum value, local maximum value. Again as pi belongs to e 0 to infinity, pi belongs to 0 to infinity, pi belongs to what, 0 to infinity.
तो therefore f of e is greater than f of pi, because f of e greater than f of x when x belongs to 0 to infinity, because f of e is the maximum value, f of x टा कौन हमारा maximum value, तो जेहेतु f of e टा maximum value, जेहेतु f of e टा maximum value x जरे जहाँ value पकड़ा मध्य f of e ही greater, okay, for all x belongs to 0 comma infinity, तो f of e इक्वल e to power 1 by e greater than f of pi इक्वल pi to power 1 by pi, pi to power 1 by pi, तो implies तो e to power of pi is greater than pi to power e to pi ఎప్పుడు చల్లా e ఎప్పుడు చల్లా, तो pi e to power pi is greater than pi to power e, hence proved. Next question, prove that inequality x square into e to power minus x square is less than or equal to e to power minus 1 for x belongs to r. For x belongs to r. x belongs to कौन दिया r दिया है, तो this is fx. Let f of x is equal to x square e to power minus x square. This is the function, this is the maximum value. e to power minus 1 the maximum value. तो सब वाले मैक्सिमम वैल्यू ठू फंक्शन सब वाले छोट कि इक्वल ही हम है कि, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स आन दियो, तो 2x ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x यू इंटू भी पड़ला यू इंटू भी, तो 2x ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कमन काट दियो, तो कौन आसला 1 माइनस एक्स स्क्वायर आसीगला, ओके। For critical value put f dash x is equal to 0, तो implies 2x e to power minus x square into 1 minus x square is equal to 0, तो implies x is equal to 0, 1 minus x square is equal to 0, e to power minus x square not exponential function never 0, तो x टा 0 पाइलो, x टा कौन पाइलो प्लस और माइनस 1 पाइलो, plus or minus 1, okay. Draw the number line, this is minus infinity to plus infinity, domain is real number r, this is minus 1, this is 0, this is plus 1, तो what is the sign देखो आपको मैं लिखी पारी actually 2 e to power minus x square into x minus s cube, so this is a positive value, 2 e to power minus s square is a positive value. Next, what is the power of x? 1, here power of x is 3, तो s cube मीन्स इटा ग्रेटेस्ट पावर नहीं कि, तो एस क्यू आगे कौन साइन अच्छी माइनस अच्छी, तो एस क्यू आगे हाएस्ट पावर देखिए हाएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो एस क्यू रहा, तो एस क्यू पूर्व कौन साइन अच्छी ना माइनस अच्छी, तो पुट हियर माइनस साइन, तो तार अपोजिट पकड़ी प्लस, तार अपोजिट पकड़ी माइनस, तार अपोजिट पकड़ी प्लस, तार अर्थ व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस 1, व्हेन एक्स लेस देन माइनस 1 एफ डैश एक्स is greater than 0, okay. अच्छा when minus 1 less than x less than 0 f dash x is कौन आसीबो नेगेटिव, f dash x is negative, when x lies in minus 1 to 0 f dash x is negative, so f dash x changes sign from positive to negative when x passes minus 1, or you may write also directly when x passes minus 1. Similarly x is less, x belongs to, or similarly x is less than 1, 0 less than x less than 1 f dash x is positive, and x greater than 1 f dash x is negative, so
f dash x changes sign from positive to negative when x passes +1. तो in both cases therefore f of x is maximum at x is equal to plus or minus 1. At x is equal to plus or minus 1. Hence maximum value is equal to f of plus or minus 1 is equal to what is fx? Fx equal x square e to minus x square. तो x जगह प्लस और माइनस 1 पकेवा जहा x स्क्वायर जगह 1 पकेवा तहा तो 1 इंटू e टू पावर माइनस -1 तो इज इक्वल टू e टू पावर -1 है बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम f of x is less than is equal to f of plus or minus means maximum value. तो x square e to the minus x square is less than is equal to e to power -1 for x belongs to R. This is hence the proof. Next question देखो, if f of x is equal to a ln x plus bx square plus x has extremum values at x is equal to -1 and x equal to then find a and b. Then find the value of a and b. कौन कहूँ आमर ना गिभेन फंक्शन इज एक्सट्रीमम तार अर्थ फंक्शनटा मैक्सिमम कि मिनिमम हो एट एक्स इज इक्वल -1 and 2. तो आम जाने वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 and 2. दैट मीन्स एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू 0. जो पॉइंट फंक्शनटा एक्सट्रीमम होची सेही पॉइंट एफ डैशटा कौन हम 0 हम. सॉल्यूशन गिवन f of x is equal to a ln x plus bx square plus x has extremum at x is equal to -1 and 2. Therefore f dash -1 is equal to 0 and f dash 2 is equal to 0. F dash -1 equal to 0 and f dash 2 is equal to 0. Now f dash x is equal to f dash x means a by x because a is constant 2bx plus 1. तो implies f dash -1 x जगह -1 पको तो -a -2b plus 1 इज इक्वल कौन नबा 0 इक्वेशन 1 and f dash 2 x जगह 2 पको a by 2 plus 4b plus 1 इज इक्वल टू 0 ना नहीं एफ डैश 2 इक्वल 0 तो एफ डैश 2 इज इक्वल 0. तो एलसीएम बाहर कर देले a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल 0 इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 आसीला इक्वेशन 2 आसीगला तो दुईटा इक्वेशन दुईटा वेरिएबल सॉल्व करा सहज. तो 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ए को ए कैंसल 8b माइनस 2b 6b प्लस 3 इज इक्वल 0 तो b इज इक्वल टू -1/2. b इज इक्वल के पाइला में -1/2. तो a पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1 तो -a -2 इंटू b कले -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज -a 2 कैंसल माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 2. तो दिस इज a इक्वल टू एंड b इज इक्वल कौन -1 कौन कहला जेहेतु फंक्शनटा एक्सट्रीमम एट x इज इक्वल -2 तो जो पॉइंट रे फंक्शनटा मैक्सिमम कि मिनिमम होची तार एक्सट्रीमम होची सेही पॉइंट रे f डैश 0 करा हिची. तो f डैश -1 इक्वल 0 एंड f डैश 2 इज इक्वल 0. तो दुईटा इक्वेशन पाइले ताकू सॉल्व कले आमे कौन पाइलो a पाइलो एंड कौन पाइलो b पाइलो. ओके Question number 6. Show that x by 1 plus x tan x
when x belongs to 0 to pi by 2 open interval 0 to pi by 2 is maximum when x is equal to cos x एटा प्रूव करिया कहूँ फंक्शन जी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल cos x एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटू 0 पाई बाई 2 तार अर्थ आम कौन दी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कले कौन करा पड़ो एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव देखा पड़ो ओके सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स tan x ओके कॉमा x belongs to 0 pi by 2 we need to show that fx is maximum नहीं कि at x is when x equal to cos x let g of x is equal to 1 by fx कौन नहीं कि मुझे g of x 1 by fx is equal to 1 plus x tan x by x तो implies g of x is equal to 1 by x plus tan x separate कर देली we need to show that g of x is minimum at x is equal to cos x at x equal कौन cos x आमे कौन शो करिबा g of x टा कौन देखिया मिनिमम देखिया fx जदि मैक्सिमम हो gx टा मिनिमम काहे कि गोटे fx इज मैक्सिमम fx इज वेरी लार्ज वैल्यू तो 1 बाय लार्ज वैल्यू इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू 1 बाय लार्ज वैल्यू कौन वेरी स्मॉल वैल्यू तो कौन है वी नीड टू शो दैट gx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू cos x है fx इज मैक्सिमम मीन्स gx इज मिनिमम ब्रैकेट रे fx इज मैक्सिमम मीन्स gx इज मिनिमम ओके फाइंड g डैश x तो g डैश x इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ओके दिस इज g डैश x g डबल डैश x बाहर करो g डबल डैश x 2 बाई एक्स क्यूब -1 बाई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2 बाई एक्स क्यूब प्लस सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव 2 सेक x और 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू कौन 10x ओके फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट g of x is equal to 0 g dash x is equal to 0 implies -1 by x square plus x square x is equal to 0 और 1 by x square is equal to sec square x और x square is equal to cos square x और x is equal to cos x taking positive sign because x greater than 0 x belongs to 0 to pi by 0 to बड़ x greater than 0 ओके अच्छा तो ये है कौन आमर x इज इक्वल टू cos x तो आमर क्रिटिकल वैल्यू आसीगला अच्छा तो पुट x इज इक्वल टू cos x पुट तो g डबल डैश एट x इज इक्वल टू cos x g डबल डैश cos x कहले कौन आसो 2 बाई cos क्यू x प्लस 2 sec square x इंटू 10x which is greater than 0 when x belongs to 0 pi by 2 0 pi by 2 means first quadrant in first quadrant all t ratios are positive in first quadrant all t ratios are positive therefore g double dash x is greater than 0 that implies gx is minimum at x is equal to कौन cos x at x is equal to cos x अच्छा gx मिनिमम ताहले fx टा कौन मैक्सिमम एज fx is equal to 1 by gx तो 1 by मिनिमम वैल्यू तो implies fx is equal to x by 1 plus x tan x is maximum at x is equal to cos x
and x belongs to 0 comma pi by 2. Okay, hence proof. Now absolute maximum and absolute minimum already कहुई तथापि तार टिके वर्किंग रूल लिखि दूची वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द absolute maxima and or absolute minima in the closed interval a comma b. Step 1 कौन करियो फर्स्ट फाइंड f dash x, find f dash x. ओके, स्टेप 2 कौन फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट f dash x is equal to 0 and solve it. Let x is equal to c1, c2, c3 are the critical values. Let x equal to c1, c2, c3. Also find the value of x where f dash x does not exist. Let it be c4. तो c1, c2, c3, c4 all are critical values. c1, c2, c3 and c4 all are कौन critical values. Let c1, c2, c3, c4 all are belongs to a, b. Suppose c1, c2, c3 and c4 all belongs to कौन a, b. ये स्टेप 2. स्टेप 3 कौन करिबा फाइंड f of c1, f of c2, f of c3, f of c4, also f of a and f of b. आर वैल्यू सब बाहर करिवो. फाइंड द वैल्यू ऑफ f of c1. x जगह c1 पकेबो, x जगह c2 पकेबो, अप टू कौन c3, c4 चार्टा क्रिटिकल वैल्यू पके देलो. आउ एंड पॉइंट f of a भी आनिबो, f of b भी आनिबो. ओके, स्टेप 4 absolute max value is equal to absolute max value. Absolute max means maximum function रे जोड़ा maximum जो पॉइंट रे फंक्शन टा maximum, that is absolute maximum value. max of f of c1, f of c2, f of c3, f of c4, f of a, f of b. चला मैक्सिमम, absolute minimum value is equal to mean of f of c1, f of c2, f of c3, f of c4, f of a, f of b. ये ला absolute minimum means absolute maximum कले ये 6टा वैल्यू भितर जे सबुठ बड़ से absolute maximum. absolute minimum कले 6टा भितर जे सबुठ छोट से कौन absolute minimum value. okay, this is the कौन absolute maxima and absolute minima. application of absolute maxima and absolute minima देखो. find the absolute maxima and minima of the function f of x is equal to x plus 1 whole square when x is less than or equal to 0 and x minus 1 whole square when x is greater than 0 in the interval -1 to 1. तो in the interval close interval -1 to 1 means a है -1, b है कौन आमर 1. a is equal to -1, b is equal to कौन 1.
तो सॉल्यूशन देखो गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर x लेस देन इक्वल 0 x माइनस 1 होल स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 इन स्क्वायर ब्रैकेट -1, 1. तो हियर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1. f dash x is equal to 2 into x plus 1 when x less than equal to 0 and 2 into x minus 1 when x greater than 0. Okay, तो put f dash x equal to 0, put f dash x is equal to 0 implies कौन आसीबो x plus 1 is equal to 0 implies x is equal to -1 and x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to +1. x is equal to +1. तो this is the good critical value, -1 is the critical value and +1 is the critical value. Also 0, also x is equal to 0 is the critical value. Also x is equal to 0 is the critical value of fx because f dash x, f dash 0 does not exist, f dash x does not exist at x equal to 0. तो 0 प्लस रे गोटे वैल्यू पाइबा 0 माइनस रे गोटे वैल्यू पाइबा यदि x जरा 0 पुट करिबा एट x इक्वल 0 पके देखो ये हला कोन आसला -2 ये हला +2 f dash 0 माइनस ये हला f dash 0 प्लस f dash 0 माइनस इज पॉजिटिव f dash 0 प्लस इज नेगेटिव तो f dash 0 माइनस इज पॉजिटिव f dash 0 प्लस इज नेगेटिव तो ताले कोन होची f dash 0 डज नॉट एग्जिस्ट तो देयरफॉर 0 इज आल्सो क्रिटिकल वैल्यू तो -1 इज क्रिटिकल वैल्यू 1 इज क्रिटिकल वैल्यू एंड 0 इज क्रिटिकल वैल्यू तो C1 C2 C3 तीन वैल्यू पाइला हमें ओके अच्छा नाउ f ऑफ 1 मीन्स x जगह 1 पुट करिबा x जगह 1 पके कोठी ऊपर पड़िबो ना तळे पड़िबो 1 इज ग्रेटर देन 0 तळे पड़िबो 1 f ऑफ 1 कहले 1 - 1 रे स्क्वायर इज इक्वल 0 बिकॉज 1 ग्रेटर देन 0 f ऑफ -1 मीन्स -1 इज लेस देन 0 -1 इज लेस देन 0 देयरफॉर -1 इठी पड़ला तो -1 + 1 रे स्क्वायर इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 x इज इक्वल 0 x इज इक्वल 0 तो x जरे 0 पकाई दियो तो 0 + 1 रे स्क्वायर इज कोन आसला 1 ओके देयरफॉर एब्सोल्यूट max value is equal to max of f of -1, f of 1, f of 0 is equal to max of f of -1 0, f of 1 0, 1 is equal to what? 1. So absolute maximum value is equal to 1 at x is equal to 0. Absolute maximum value is equal to 1 at x is equal to 0. Therefore absolute maximum value 1 at x is equal to 0. Similarly absolute minimum value is equal to mean of f of -1, f of 1, f of 0 is equal to mean of 0, 0, 1 is equal to कोटा मिनिमम भितर 0 टा ए मैक्सिमम है 1 तो 1 नहीं है देयरफॉर absolute minimum value is equal to 0 at x is equal to +or -1 at x is equal to +or -1 okay
नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर कमा माइनस वन लेस देन 0 एस क्यू माइनस एक्स वैन 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 2 ऑन माइनस वन कमा 2 फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू एंड फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट एंड एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट and extreme value okay अच्छा solution given f of x is equal to x by 1 minus x square minus 1 less than x less than 0 sq minus x 0 less than equal x less than 2 है defined on minus 1 comma 2 open interval okay तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यू बाई वी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन डेरिवेटिव एक्स टू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है कि माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर minus 1 less than x less than 0 okay and f dash x is equal to this is 3x square minus 1 when 0 less than equal x less than 2 0 less than equal x less than 2 okay for critical value put f dash x is equal to 0 1 plus x square by 1 minus x square whole square is equal to 0 implies x square equal to minus 1 not possible on minus 1 less than x less than 0 okay अच्छा when 0 less than equal x less than 2 f dash x is equal to what 3x square minus 1 so this implies 3x square minus 1 equal to 0 implies x is equal to plus or minus 1 by root 3 as x greater than 0 as x belongs to 0 comma 2 तो x is equal to taking positive sign only okay f double dash x बाहर करो f double dash x is equal to what 6x तो implies f double dash 1 by root 3 is equal to 6 by root 3 greater than 0 जेहेतु f double dash टा पॉजिटिव तो फंक्शन टा कौन है मिनिमम तो implies f of x is minimum at x is equal to 1 by root 3 and minimum value is equal to f of 1 by root 3 कोठी पड़िबो ना सेकंड फंक्शन पकाइबो 1 by root 3 रो क्यूब माइनस 1 by root 3 एस क्यू माइनस एक्स नहीं कि इज इक्वल टू 1 by root 3 कॉमन कर देले 1 by 3 minus 1 तो 1 by root 3 into minus 2 by 3 दैट इज minus 2 by 3 root 3 दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो ये है दिस इज द मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू minus 2 by 3 root 3 at x is equal to 1 by root 3 ओके ये ला हमर प्रॉब्लम some useful results देख देखिए some useful results ओके 1 जानी सब आगु एरिया ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ ए स्क्वायर कौन एक्स स्क्वायर परिमीटर
perimeter कौन 4x ना नहीं दिस इज द स्क्वायर x x नहीं कि 2 area of a rectangle is equal to xy length into breadth perimeter 2 into x plus y x y. Next 3 area of a circle pi r square. okay तार perimeter means circumference of the circle. Circumference of the circle. Circumference is equal to 2 pi r नहीं कि this is a circle, this is the center, this is the radius r. तो एरिया डाकना था पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस था 2 पाई आर. 4 area of a trapezium. Area of a trapezium is equal to half into sum of the two sides, half into sum of the two parallel sides, sum of the two parallel sides into height. Trapezium is the trapezium. So this is two parallel side, this is the two parallel side, and height, this is the height. okay this is the sum of two parallel sides into height. 5 volume of a sphere. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube and surface area is equal to 4 pi r square. surface area लगा 4 pi r square नहीं कि और आता कौन रेडियस. okay this is the radius r sphere. 6 असला तमर वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंडर पाई आर स्क्वायर h. surface area 2 pi r h. total surface area 2 pi r h 2 pi r h plus pi r square. 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r square. okay ये सिलिंडर देखो टिके दिस इज द सिलिंडर नहीं द हाइट टा दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस दिस इज द रेडियस. ओके नेक्स्ट 7 वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square h. surface area pi r l और total surface area pi r l plus h नहीं pi r l plus 2 pi r square. pi r l plus 2 pi r square. This is the cone. pi r square.
दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज आर। ओके, एल हला स्लांट हाइट, एच रा हाइट, आर टा रेडियस, सब राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मीन्स बेस को कौन हम परपेंडिकुलर हम हाइट टा, बेस को परपेंडिकुलर। ओके, एट नंबर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड एक्स वाई जेड, सरफेस एरिया 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, ओके, तो ये ला एक्स वाई जेड। 9 वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एक्स क्यूब, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अर्थात टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस 6x स्क्वायर, एक्स एक्स एक्स। ओके, 10 एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/√3 साइड रो स्क्वायर, साइड रो स्क्वायर √3/4 सॉरी √3/4 साइड रो स्क्वायर। परिमीटर कहले परिमीटर 3 इंटू साइड और 3x नहीं कि x x x है √3/4 x स्क्वायर। ओके, सो दिस आर द थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में कौन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम